Okay, so good morning everyone. In the last lecture, we have started the basic concepts of the CPU scheduling, and I have just talked about the various types of queues which are involved in the process of scheduling, and then we have discussed various types of schedulers. The long-term scheduler, which is also known as job scheduler, which picks the processes from the new state and put them into the ready state. Then we have talked about the short-term scheduler, which is also known as CPU scheduler, whose task is to choose any one process from the ready state or from the RAM and assign the CPU to that particular process. And after that, we have learned some other interesting terms, that what is a context switching, what is a dispatcher. So now this is very important, why CPU scheduling and when it will happen. So basically we have learned whenever the CPU will be idle, whenever CPU will not be having any process to execute, then the task of this CPU scheduler will begin. And the different cases we have already discussed in the last lecture. Then whenever a process switches from running to waiting state, running to ready state, or it simply terminates, and if any process switches from waiting to ready state, then in all these cases the CPU scheduler has to take decision. It has to choose any one process from the ready state and it has to allocate that process to the CPU. And as I have discussed these two important terms, the very first is non-preemptive and second is the preemptive. So in next few lectures, we are going to use these terms. So you must remember what is the meaning. So as I have discussed in case number 1 and case number 4, where the process itself terminates or it itself goes for the input output operation, that is the case of non-preemption, and that is the non-preemptive scheduling, where we are not forcing the process to vacate the CPU. But the case number 2 and case number 3 are the case of preemptive scheduling, where we forcefully vacate the process from the CPU, and we will discuss the various cases, the various algorithms on the basis of these preemptive and non-preemptive scheduling. So preemptive means simply you can assume that it is a forceful, and non-preemptive means there isn't any force on the processes. So if the process itself terminates or itself requesting for the input output operation, then it is non-preemption. But if the process is forcefully sent back to the ready queue or the ready state, then that is a kind of a preemption. So all these things we have discussed in detail. Now there are some scheduling criteria which is the basis of this CPU scheduling, and I'm just going to discuss some important terms here which will be very helpful while we are solving the numericals further. So the very first important criteria is CPU utilization. So the basic purpose of doing this CPU scheduling is that we want to the CPU to be busy at all the possible times. So the overall basic requirement is that the CPU should not sit idle, the CPU should be busy all the times, and the CPU utilization can range from 0 to 100%, but in the real scenario, this generally ranges from 40% to 90%. And the second important criteria is throughput. So what is the basic purpose or the major purpose of doing this CPU scheduling? The throughput. So throughput can be defined as the total number of processes that are completed per unit time. So if I am having the time of suppose 10 seconds, so in that 10 seconds, how many processes we are able to execute, how many processes we are able to complete. So that is the throughput. And another interesting term is this turnaround time. So just before starting this interesting terms which are not mentioned here, but I'm just going to discuss because it is going to be used in the numericals further. So very first is the arrival time, then we have burst time, then we have turnaround time, then we have waiting time, and then we have response time. So आप लोगों को याद होगा हमने मल्टीटास्किंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग वाले लेक्चर में एक एग्जांपल लिया था
a clinic is there, a doctor is there, a lab is there, and RAM को हमने एक waiting room बनाया था जहाँ पे various processes और patients are waiting to meet the doctor. तो वही यहाँ पे हम numericals जब करेंगे next lecture onwards, I think today also. So there will be some terms used such as arrival time, CPU burst time, turnaround time, waiting time, and response time. So according to that, we will just learn so many new things. So arrival time, as the name suggests, arrival means जिस टाइम पर वो प्रोसेस रैम में आया, रेडी स्टेट में आया, रेडी क्यू में आया. So that is the arrival time, as you can understand with the name arrival time. Whenever any process enters the ready state or the ready queue, that is known as its arrival time. Secondly, we have CPU burst time. So CPU burst time is the time which any process requires for its execution. So suppose for any process, the CPU burst time is 10 milliseconds. So that means in total, that process requires 10 milliseconds to execute on the CPU. Then we have turnaround time. So turnaround time is the total time which is required to execute any process, and turnaround time is basically the interval from the time of submission of the process to the time of completion. So that means जैसे ही कोई process रैम में आ गया, रेडी क्यू में आ गया, उसको वहां पे वेट करते हुए कितना टाइम लगा, उसके बाद उसको सीपीयू एलोकेट हो गया, वो सीपीयू पे एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हुआ, इन बिटवीन उसे कुछ इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट परफॉर्म करनी है, फिर वो वापस इनपुट आउटपुट करके रेडी क्यू में चला गया, रेडी क्यू से फिर वो दोबारा सीपीयू पे गया. तो जैसे ही वो फर्स्ट टाइम अराइव हुआ था रैम के अंदर, रेडी क्यू के अंदर, और जब तक वो कंप्लीटली एग्जीक्यूट नहीं हो जाता तो वो सारा जो टाइम होगा वो time is known as the turnaround time. So turnaround time is the total time, and it includes all the times or all the periods when a process spent waiting to get into the memory, waiting in the ready queue, executing on the CPU, as well as doing the various input output operations. So जैसे ही कोई, अगर हम डॉक्टर वाला एग्जांपल लेते हैं तो सपोज स्टार्टिंग में सुबह 10 बजे कोई प्रोसेस या पेशेंट क्लिनिक में आ गया, देन हिज टाइम स्टार्टेड, एंड सपोज वो 3 बजे फ्री होता है शाम को या दोपहर को, देन द टोटल टाइम इज the 5 hours, that is the turnaround time. So in between that 10 AM and 3 PM वो कुछ देर पहले वेट करेगा रैम के अंदर, देन वो डॉक्टर से मिलेगा, डॉक्टर ने उसे कोई एक्सरे कराने को बोला, वो कराएगा, वो करके वो फिर से वेट करेगा, वेट करने के बाद वो फिर से डॉक्टर से मिलेगा. तो जब तक वो प्रोसेस कंप्लीटली एग्जीक्यूट नहीं हो जाता, जैसे ही वो सिस्टम को लीव करेगा, रैम से बाहर चला जाएगा, सो दैट इज द कंप्लीट टाइम, एंड द टर्नअराउंड टाइम इज द टोटल टाइम, and basically it is the difference between the complete time and the arrival time. So जितना भी टाइम प्रोसेस ने रैम के अंदर, सीपीयू के अंदर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करने में लगाया, जब तक वो कंप्लीटली एग्जीक्यूट नहीं हो गया, दैट टोटल टाइम इज नोन एज द टर्न अराउंड टाइम. Another interesting term is waiting time. So ये simple है, amount of a time a process has been waiting in the ready queue. तो जब तक process जितने टाइम तक ready state में रहेगा, ready queue में रहेगा, that particular time is known as the waiting time. So suppose 10 बजे पेशेंट आता है क्लिनिक पर, वो स्टार्टिंग में सबसे पहले रैम में ही जाएगा एंड रेडी क्यू में ही जाएगा. सो सपोज उसको 11 बजे डॉक्टर से मिलने का चांस मिला, सो 1 आवर उसने डेफिनेटली वेट किया. डॉक्टर से मिलने के बाद वो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करके वो फिर से अपना रैम में चला जाएगा, वेट करेगा. सो सपोज फिर से उसकी हाफ एन आवर बाद बारी आई, देन वो डॉक्टर को मिला, देन उसका काम कंप्लीट हुआ. सो टोटल टाइम इज 1 hour 30 minutes for that particular process. So that is the waiting time. So कोई भी process जितने टाइम तक रेडी क्यू में, रेडी स्टेट में है, वेट कर रहा है सीपीयू मिलने की, so that particular time is known as the waiting time. And the last and the most interesting, response time. So response time is amount of time it takes from when a request was submitted until the first response is produced. So हमने डिस्कस किया था मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टीटास्किंग में यही डिफरेंस है. मल्टी प्रोग्रामिंग, if there are 10 processes,
P10 never knows उसकी बारी कब आएगी, but in the time sharing systems, in the multitasking system, the time quantum or the time slice is fixed, that every process will get suppose 5 minutes, and definitely each and every process will get the response from the CPU. So this is the response time when suppose the process is waiting in the ready queue or in the ready state. The first time it is allocated to the CPU is known as the response time. So this is the terms, these are some of the terms which you must remember. So arrival time is the time whenever a process enters into the ready state or ready queue. Then CPU burst time is the total time which a process requires to execute on the CPU. Then we have turnaround time is the total time which is required for the complete execution of the process, and this turnaround time includes all the time. जैसे ही patient clinic में आ गया, उसका time start हो गया, उसके बाद वो वेट करे, डॉक्टर से मिले, अपना मेडिकल शॉप पे जाए या एक्सरे करवाए, दैट ईच एंड एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड जब तक वो शाम को सारा टास्क कंप्लीट कर कर वापस नहीं जाता. सो दैट इज द टर्न अराउंड टाइम. सो टर्न अराउंड टाइम जब उसका काम कंप्लीट हो गया माइनस जिस टाइम पर वो आया था, सो दैट इज द टोटल टाइम विच दैट पेशेंट स्पेंड इन द क्लिनिक. सो दैट इज द टोटल टाइम. वेटिंग टाइम, जितना भी टाइम कोई प्रोसेस रेडी क्यू में रेडी स्टेट में वेट करेगा सीपीयू को मिलने के लिए, सो दैट इज द वेटिंग टाइम. एंड रिस्पॉन्स टाइम इज किसी प्रोसेस को जब फर्स्ट टाइम सीपीयू एलोकेट होगा, दैट इज द रिस्पॉन्स टाइम. सो आई होप these all terms are clear. So I am having one question from all of you. So if you have to answer out of these scheduling criteria, which scheduling criteria we have to maximize and which scheduling criteria we want to minimize. So I want the answers from some of you. So कौन बताएगा CPU utilization हमें maximum करना है या minimum करना होगा? Sir, maximum. Maximum. So we want to keep the CPU busy as much as possible. So हम चाहेंगे कि जैसे ही CPU फ्री हो जाए, कोई प्रोसेस टर्मिनेट हो गया या वापस इनपुट आउटपुट के लिए चला गया, तो साथ के साथ ही CPU शेड्यूलर रेडी क्यू में से एक प्रोसेस को पिक करके CPU को दे दे. So that's very nice. Whomsoever have answered. So the CPU utilization should be maximum. What about throughput? Sir, maximum. Maximum. Okay, so very nice. Throughput is again the total number of processes that can be completed per unit time. So अगर मैं 10 सेकंड के अंदर 20 processes को execute कर सकता हूँ rather than 10 processes, so that would be much better. And this is only possible when the CPU scheduler or the short-term scheduler is so quick, so frequent that it is assigning very fastly the processes from the ready state to the running state. So हमें CPU utilization को भी maximum करना है, throughput को भी maximum करना है. What about turnaround time? Minimize. So we want that कोई भी प्रोसेस कम से कम टाइम ले, उसको टोटल टाइम कम लगे. कोई भी पेशेंट अगर 10 बजे आ रहा है तो उसे 3 बजे तक ना बैठना पड़े, 11 बजे मैक्सिमम 2 आवर्स, 12 बजे तक वो सारे काम कंप्लीट करके वापस अपने घर चला जाए. सो सीपीयू यूटिलाइजेशन शुड बी मैक्सिमम, थ्रूपुट शुड बी मैक्सिमम, टर्न अराउंड टाइम शुड बी मिनिमम. व्हाट अबाउट वेटिंग टाइम? Minimum. Waiting time should be minimum. Okay, very good. So waiting time हम चाहेंगे कि जैसे ही कोई पेशेंट क्लिनिक में जाए उसे साथ के साथ डॉक्टर अवेलेबल हो, उसे बहुत ज्यादा वेट ना करना पड़े. ओके, 5, 10, 15 मिनट्स इज ओके, बट अगर पेशेंट को 1 आवर 2 आवर सिर्फ डॉक्टर से मिलने के लिए वेट करना पड़ेगा, सो डेफिनेटली दैट पेशेंट इज गोइंग टू बी फ्रस्ट्रेटेड. सो वेटिंग टाइम शुड आल्सो बी मिनिमाइज्ड, मिनिमम होना चाहिए, टर्न अराउंड टाइम भी मिनिमम होना चाहिए. एंड व्हाट अबाउट द रिस्पांस टाइम? Sir, minimum, sir. रिस्पॉन्स टाइम शुड ऑल्सो बी मिनिमाइज्ड. जितनी जल्दी रिस्पॉन्स मिलेगा प्रोसेस को, सो दैट प्रोसेस विल बी मोर हैप्पी. तो जितने भी पेशेंट आए होंगे, अगर किसी को 2 आवर्स वेट करने की बजाय सिर्फ 15 मिनट्स में नंबर आ रहा है, हर एक डॉक्टर सिर्फ 5-5 मिनट दे रहा है एक पेशेंट को, तो सारे प्रोसेसेस का रिस्पॉन्स टाइम बहुत कम हो जाएगा. सबकी बारी एटलीस्ट
फर्स्ट टाइम बहुत जल्दी जल्दी आ जाएगी. सो दिस इज द थिंग विच वी हैव डिस्कस्ड इन द केस ऑफ मल्टीटास्किंग और द टाइम शेयरिंग सिस्टम. सो मल्टीटास्किंग का बिगेस्ट एडवांटेज यही है कि सभी प्रोसेसेस की टर्न आती है, सबका रिस्पॉन्स टाइम बहुत कम हो जाता है, सबको एक बार डेफिनेटली बहुत जल्दी सीपीयू एलोकेट हो जाता है. सो दीज आर सम ऑफ द शेड्यूलिंग क्राइटेरियाज by which we can understand the concept of CPU scheduling more accurately.